Hello everyone and welcome back to Balajee online classes. Today I Fezia Kadwai is here to illustrate chapter number 7, that is the human settlements, transport and communication of class 7th geography. What do you understand by settlement? Settlement is basically a cluster of houses where human beings live. It's called as a settlement. Settlement can belong to cities also, to towns also, to villages also. And what is a modern day settlement? Modern day settlement basically consists of the houses, the buildings, the transport and communication system, and also the inhabitants of the settlements. देन वी हैव द टॉपिक ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट. सेटलमेंट स्टार्ट कैसे हुआ? तो हम जानते हैं कि अर्ली मैन जो थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, बेसिकली दे वर व्हाट, दे वर द नोमैड्स. वो बेसिकली एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते थे. But slowly and gradually, with the evolution and with the development, and when they got to know how to do agriculture, and the thing agriculture came into existence, then from there the settlement started. From there the settled life began. राइट. सो बेसिकली जब हमारा ट्रेड और कॉमर्स ग्रो करने लगा, हमारा एग्रीकल्चर ग्रो करने लगा, तो जो ह्यूमन बींग्स थे वो एक सेटल लाइफ उन्होंने जीना स्टार्ट कर दी. राइट. देन धीरे धीरे टाउन्स बनने लगे, बिल्डिंग्स बनने लगी, टेम्पल्स, मॉस्क, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स. राइट. देन अगर हम देखें कि आज हमारे पास वी हैव वेल प्लान सिटीज़ जिसमें मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हैं, जिसमें रोड्स हैं, रेलवेज हैं, एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है. राइट. एक प्रॉपर सैनिटेशन और ड्रेनेज सिस्टम है और सारी फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं. Then we have rural and urban settlement. On the basis of the type of occupation that is practiced by the people, we have two types of settlements. First is the rural settlement and second is the urban settlement. जो हमारा रूरल सेटलमेंट है वो बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे लोग क्या होते हैं, वहाँ पे लोग बेसिकली आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं. जैसे आपकी माइनिंग हो गई, फिशरी हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई. राइट. और विलेजेस जो हैं वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. देन वी हैव अर्बन सेटलमेंट. अर्बन सेटलमेंट में क्या होता है, उसमें बेसिकली लोग जो होते हैं वो इंगेज होते हैं हमारी सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में. लाइक टाउन्स एंड सिटीज़ आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सेटलमेंट. Then we have temporary and permanent settlement. Depending on the length of the time for which they are in use, a settlement can be divided into two types, that is permanent or temporary. जो हमारे टेम्परेरी सेटलमेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, दे आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. कम टाइम के लिए ऑक्यूपाई किए जाते हैं. जैसे कि हमारे ट्राइबल पीपल होते हैं, बेसिकली दे लिव इन डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट एंड अदर एरियाज. राइट. देन हमारे परमानेंट सेटलमेंट वो सेटलमेंट्स होते हैं विच आर नॉट अबंडेंट एंड रिमेन इन कॉन्टिन्यूसली फॉर 7 years, एंड दीज टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर कॉल्ड एज परमानेंट सेटलमेंट्स. देन वी हैव कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स सेटलमेंट्स. ये क्या होते हैं? सो बेसिकली वो सेटलमेंट्स जहाँ पे हाउसेस जो होते हैं वो साइड बाय साइड बने होते हैं. ठीक है. उनको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स. और वहाँ हाउसेस जहाँ पे बहुत कुछ लोग, कम लोग रहते हैं और बेसिकली जो हाउसेस होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट. देन वी हैव पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. पहला पैटर्न है सर्कुलर पैटर्न. They generally developed around a lake or pond or an oasis in a desert. When the people settle around such water body, it is called as circular pattern. Then we have linear settlement. ये वो settlement है that developed along a highway or a railway. एक proper line में जहाँ पे houses built होते हैं. ठीक है. उसे हम कहते हैं basically linear settlement. Then we have rectangular pattern. Now this type of settlement generally develops at the crossroads and the houses are built side by side leaving lanes and bylanes. Then we also have the last pattern, that is the triangular pattern. वो कभी कभी क्या होता है, जो सेटलमेंट्स होते हैं they basically develop on the confluence of two rivers and the houses are built in between the two rivers and that ultimately grow into a triangular pattern. Then we have patterns of urban settlement. अभी हमने रूरल का डिस्कस कर लिया. Now we are going to discuss about the urban settlement. पहले आपके होते हैं industrial towns. They are largely concerned with the processing of raw materials into finished products. Basically जैसे आपका लुधियाना हो गया, जमशेदपुर हो गया, ये basically आपके primarily क्या है, industrial towns हैं. Then we have market towns. They act as market sites for exchange of goods. They are mainly the collection and distribution centers for goods.
देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, ऐसे टाउन्स जो बेसिकली वो फंक्शंस परफॉर्म करते हो जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, लाइक वी हैव दिल्ली, वी हैव वॉशिंगटन डीसी, वी हैव लंडन, दे आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. Then we have cultural towns. Such towns are known for the promotion of the country's culture and education. For example, we have Shanti Niketan at Bhirbham is an example of such type of cultural town. Then we also have port towns. Port towns basically जो port के functions perform करते हैं. For example, we have Mumbai and Visakhapatnam. Then we have resort towns. These towns are basically known for tourist attraction. For example, we have Nainital, Mussoorie, Shimla, etc. Then comes the topic transport. Now, the free flow of traffic and goods from one place to another is what? Is the transport. इसे बोलते हैं transport, ठीक है? और it is the lifeline of trade. जो transport होता है वो एक तरह की एक lifeline होती है trade का, एक base होता है trade का, right? अब हम पढ़ेंगे कि transport start कहाँ से हुआ, transport का origin कैसे हुआ, right? पहले early times में transport बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही टायरिंग प्रोसेस होता था. वाई? बिकॉज उस टाइम पे प्रॉपरली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थे. पीपल दे बेसिकली यूज टू ट्रैवल डिस्टेंस थ्रू वॉकिंग. वो चल कर अपने फुट पे इतने लंबे लंबे डिस्टेंस तय करते थे. उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स फॉर दिस पर्पस, लाइक एलिफेंट्स, हॉर्सेस, कैमल्स, याक्स. देन उसके बाद जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, जब व्हील का इन्वेंशन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, आपके कार्ड्स, आपके बुलक कार्ड्स, आपकी ये सारी चीजें स्टार्ट हुई. उसके बाद विद द इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रॉपर हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो गया. और आज अगर देखा जाए तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट इज वेरी एफिशिएंट. देन वी हैव द रोडवेज. Now, good roads are the integral part of infrastructure that needed for the development of any country. Roads may be metalled or unmetalled. रोड दो टाइप्स के होते हैं, एक मेटल्ड और एक अनमेटल्ड. वो रोड जिसका एक ड्यूरेबल सरफेस होता है and it is made up of stone, chips and tar is called as metal road, or we can say पक्का road. And then that another road which do not have a durable surface, it is called as unmetalled or कच्चा road. Then in developed countries there are special roads which are called as highways. जो highways होते हैं जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत फास्ट मूव करती है, जहाँ पे रोड्स जो होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, right? They basically connects towns and cities separated by large distances. Then in India, national highways basically connect different states and state highways connect different cities and towns. The latest development in the construction of Golden Quadrilateral and North, South, East, West corridors that will join Srinagar to Kanyakumari from north to south and Bhuj to Guwahati from west to east. Then we also have Leh-Manali highway, which is one of the highest roads in the world. Then we have railways. Now, railway are also a very important mode of land ट्रांसपोर्ट, राइट? लैंड ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है हमारा रेलवे. जो रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली बहुत एक्सपेंसिव होता है. और उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें आपको रेलवे ट्रैक्स ले डाउन करने पड़ते हैं, राइट? तो ये जो प्लेन एरियाज होते हैं, जो ऐसा एरिया होता है जो बिल्कुल इसका जो सरफेस होता है दैट इज स्मूथ और लेवल, वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स को ले डाउन करना आसान होता है, ईजिली हो जाता है. बट आजकल टेक्नोलॉजी की हेल्प से और एडवांस सिस्टम की हेल्प से जो माउंटेन एरियाज है वहाँ पे भी आपका रेलवे सिस्टम, रेलवे ट्रैक्स ले डाउन हो गए. Then the densest network of railways is found in the Western Europe and East Central America. Then we have the waterways. Now, waterways is a mode of transport which operates upon the sea, rivers and the rivers. So basically हमारे समुद्र में चलते हैं, right? Then it is the cheapest mode of the transport. ये cheapest mode है and this is the earliest mode of transport, right? It promotes the international trade and it interconnect different countries of the world. वाटर ट्रांसपोर्ट में भी इनलैंड और ओशियनिक, इनलैंड भी हो सकता है और ओशियनिक भी हो सकता है. जो इनलैंड होता है बेसिकली, जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं, दे बेसिकली इंक्लूड नेविगेबल रिवर्स एंड कैनाल्स. Then we have the St. Lawrence Seaway in North America, which connects Great Lakes to the Atlantic Ocean. It is the busiest inland waterways in the world.
Then we have international trade is largely dependent on the oceanic transportation which is more economical. जो हमारा oceanic transportation होता है वो ज़्यादा economical होता है. जो हमारी North Atlantic Ocean है that basically carries the greatest traffic of all the ocean routes. It connects eastern part of North America and West European countries. Then we also have Suez Canal. Suez Canal in Egypt is a part of one of the most important oceanic routes in the world. Then we have the air transport. Now, this is the latest development in the history of the transport, right? This is a speedy but expensive transport system. ये speedy तो है but this is expensive, right? It involves the development of advanced infrastructure such as airports which are fitted with the latest technology and aircrafts that fly at high speeds. And as they require advanced technology, that's why जो developed nations हैं वो इसको intensively use कर सकते हैं, पर जो developing nations हैं वो अभी भी उसको इस system को इतना properly और इतने high level पे use नहीं कर पाते हैं. Then some countries in Africa and South America still do not have the facilities of the air transport. They are still in a developing position of all these things. Then we have the communication. Now, communication means what? Communications means sending and receiving messages and ideas from one person to another. Then today, with the development of modern modes of transports, mail can be transported by rail, road, air and water. देन जो डेवलपमेंट हमारे पोस्टल सिस्टम का हुआ है वो एक मेजर अचीवमेंट था. ठीक है, सारी कंट्रीज में ऑलमोस्ट हमारे पोस्टल सर्विसेज हैं. ठीक है, इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क वी हैव ऑफ द पोस्टल सर्विसेज. ठीक है, जिसमें बेसिकली हमारे पोस्ट ऑफिस हैं जो वेरियस प्लेसेस पे लोकेटेड हैं, जिनकी बहुत सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं. आपके बेसिकली आपकी स्पीड पोस्ट है, आपकी टेलीग्राम है, आपका मनी ऑर्डर है, एट्सेट्रा. देन द डिस्कवरी ऑफ टेलीफोन बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एडेड स्पीड टू कम्युनिकेशन एंड many people now use cell phones which are also used without the wires. cell phones क्या है? बिना किसी वायर के एक ऐसी डिवाइस है जो बेसिकली लोगों को कनेक्ट करती है एक दूसरे से. Then messages are also sent through satellites using computer network. Then the fax, the email, the computers, etc. all these things have revolutionized the system of communication in the world. Then the use of computers have also increased the speed and in the same time they have decreased the cost of the sending messages. Then we have internet, the discovery of internet which connects basically millions of computers at the same time and help in exchange of the information amongst themselves. Then we also have mass media. Mass media is another type of communication that can reach people, a large number of people at the same time. Then newspapers, televisions, radio, films and press are all examples of mass media. So with this topic, your chapter has been ended, class. Now it is your responsibility to read this chapter properly. Also, you can get the notes of this chapter through School Mitra app. Kindly download those PDFs and complete your work. Thank you and have a nice day.